आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख 6 अक्टूबर बरोज़ जुमा को शहजादे मुकरम जा बहादुर मरहूम की 90वीं यौम विलादत के बावक़ार मौके पर मुकरम जा स्कूल्स ने फाउंडर्स डे का किया एहतमाम। इस मौके पर आसिफ जा शशुम नवाब मीर महबूब अली खान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वार्डरोब का HEH निज़ाम म्यूजियम पुरानी हवेली पैलेस में जनाब AK खान IPS रिटायर्ड के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस म्यूजियम की हाल ही में तज़ीन नो की गई ये दो वार्डरोब्स जो कि एक दूसरे के मुतवाज़न हैं और दुनिया के तवील तरीन वार्डरोब्स तस्लीम किए जा चुके हैं। हर एक वार्डरोब तकरीबन 176 फीट तवील है जो बर्मी सागवान से तामीर किए गए हैं। फाउंडर्स डे में जनाब AK खान मेहमान खुसूसी और मिस्टर श्याम मोहन चेयरमैन फॉर्म फॉर डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल पीस एमिरेट्स क्वालिटी सर्कल फॉर्म ऑफ इंडिया व साबिक़ सदर हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एजाज़े मेहमानी की हैसियत से शिरकत की। ट्रस्टीज मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग नवाब MA फैज़ खान और जनाब फैज़ बिन जंग ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सेक्रेटरी मिस्टर इंडिया पैन रिटायर्ड कर्नल मिसेस रेखा वादा प्रिंसिपल और मोहतरमा कौसर सईद एकेडमिक एडवाइज़र इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स थे। जनाब AK खान ने निज़ाम हैदर की तालीमी मैदान में खिदमात और सेक्युलर बुनियादों पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए बताया कि जिस दौर में दूसरे रजवाड़े अपनी जागीरियत और मोहल्लात को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर रहे थे, निज़ाम हैदराबाद ने तालीमी मैदान में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी, हैदराबाद को तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल किया और कई सारी इनकी बेहतरीन खिदमत को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्रीमान, प्लीज गिव अस द परमिशन टू डिस्पर्स। जय श्रीमान, ब्रेक विसर्जन। ब्रेक सामने से शूटिंग के साथ तेज चल। Thank you. My friend will continue. As you all can see, it is an impressive structure with its interiors and interesting specimens of antique furniture within this U-shaped complex with a central single-story building. To our Founders Day celebration. Give a big round of applause. I would now request the Forum for Democracy and Global Peace. He is also the chairman of Emeritus Quality Circle Forum of India. He had been the president of the Hyderabad Management Give a big round of applause. A lot of things are being talked about in the narrative about the erstwhile Hyderabad and the type of culture that existed here, the type of administration. But let me tell you, I am a student of history in many ways. I have studied the history of Hyderabad state also in fair amount of depth, particularly of the last 6-7 centuries. For the younger generation here, those who are
uninitiated cities. There were not even tiny villages at the time when these two cities flourished. In many ways, Hyderabad scored over Delhi at that time in progressive nature. The type of hospitals that came up here. And in fact, Hyderabad got electricity much ahead of Delhi. I don't know how many are aware of this. The type of industries, textile industries, mechanical industries, railway lines, and all these things were started much earlier in Hyderabad than in Delhi. Bangalore did not exist. Chennai was a fisherman village. Mumbai was even well known in all political, social, police circles, as an excellent officer of decision. Also, he, Lieutenant Adepati, as Nizam Sir, Vice Master, Trustee, Dr. Syed Hussain Sahab. I am extremely happy to be here sharing with us. We couldn't hold this inside our palace because our restoration work is not complete as yet, but we are looking forward of doing it up and furnishing it back to its original glory soon. I would like to honorable members to note that many, well-known movies like Nizam was all shown inside over here, and other Hollywood movies as well. So that's how it is. Talking about our institution, Makram Jah School has a very good infrastructure, improving by the day, but we have to work on our IT infra. It has to be on par with all the international schools all over the country. Sports arena is what is being planned for our students. They are excelling pretty good, and I'm very happy to see they're competing in a cricket match against a premier school and doing very well. So we got to work. Our NCC cadets are exceptional, so that way we are doing pretty well. A.K. Khan Sahab, Janab A.K. Khan Sahab, IPS, Chief Advisor to the Chief Minister of Andhra Pradesh, Government of Andhra Pradesh. Shah Mohan Sahab, who means a lot to me. Well, the chairman of many forums actually, and my colleague on an organization that we have worked together for more than 20 years. So I'm glad that both could actually make it. I always recollect from my younger days, my uncle who was also a fellow IPS officer, used to speak about a young IPS officer, police officer, who was officer and gentleman, both, and hailed from a place very close to his. Mr. Mohammed, who was also a trustee of many of our trusts. So that's back then, since I have known Khansa very closely and I'm great to look for. Shah Mohan Saab and I go back again many years, over 35 years, when Hyderabad Tech Association that was started to bring Hyderabadis together from all over the world, and we were members of that. Shah Mohan Saab is an old Hyderabadi brother of a formidable politician, Mr. Madan Mohan, a man whose contributions are always remembered. We both have been a part of an educational institution for about 20 years. We have initiated institutions in Kadapa when it was 47 degrees about 15 years ago. I remember standing by him, he as the chairman and I as deputy of the board, and that's how it all went off so very well. And of course our anchor, our mothership at Begum Page. हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर
04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।